माननीय वित्त मंत्री जी। Thank you, sir. Thank you very much for allowing me to respond to the honorable members who spoke on the finance bill. माननीय सदस्य वित्त मंत्री जी इजाजत नहीं दे सकती, इजाजत मैं ही दे सकता हूँ यहाँ पे। तो माननीय वित्त मंत्री जी, He's allowed me. He's called me. Okay, sir. Thank you very much, Speaker sir, for allowing me to respond to the discussions which have taken place on the finance bill. This finance bill, sir, we have attempted to do several things which, as per the expectation and aspiration of the people of India, and also the goal that the Honorable Prime Minister has given us towards a Vikasit Bharat by 2047, which is hardly 22 years from now. So we have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. So I'll straight go to talking about the direct taxation, in which the income tax is something which I'll spend a minute on, and then talk about the other direct tax reforms that we've undertaken. We've recognized the strength, spirit, and the contribution of the Indian middle class, and as a result, this budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So for the salaried taxpayers, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal relief that is going to be applied for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. So I will elaborate this point in response to some of the members who have asked specific question about what happens for those who are crossing 12 lakhs per annum income. I'm also glad to say that through this finance bill, we have brought in the new income tax bill, meaning I have not presented it as part of the finance bill. The introduction of the new finance bill during the budget session this time, which of course is rightly gone into a select committee's review, post which we will take it up in hopefully in the monsoon session, aims to. Yes, I thought I said that. I said it is not brought through the finance bill. It is a new income tax bill. Thank you. So brought during this budget session, but hopefully we'll have it taken up for discussion in this house during the monsoon session. So during this budget session, sir, not only the provisions and also certain reformatory steps taken during the through the finance bill, the rationalization of customs also is a major thing that I'll come to talk about in a minute. So the steps taken for the customs duty reduction are also post elaborate discussion with the stakeholders. So there has been an element of Jan Bhagidari, both in the preparation of the new income tax bill and in the larger finance bill itself. The other direct tax reforms, sir, are worth mentioning. We have brought down certain TDS and TCS provisions. We've increased the thresholds so that the deduction of tax starts at a higher threshold rather than a lower. In respect of sale of goods, the requirement of TCS, particularly under section 206C, 1H, is proposed to be done away with. We're completely removing it. Further,
Considering the difficulties which is faced by the taxpayer, we now propose to allow the benefit of two such self-occupied properties without any condition. And that is a major step which will benefit the middle class, because in order to prove that the second house is also under their occupation, they do quite a few of paperwork and diligence has to be kept up. We are now saying you don't even need to do the paperwork. We take it as you stated for the second self-such occupied property. In order to streamline the process of transfer pricing, sir, and to provide an alternative to yearly examination, we have proposed that a scheme of determining arm's length price in international transaction for a block period of 3 years at a time. So this will be in line with the global best practices. So annually, people do not have to rush to prove what the transfer pricing commitments will be. Further, we've also, with a view to reducing the litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules have been expanded. Instead of having it narrow and expecting people to continuously come and prove that it is required for their business, we've widened it, and the safe harbor rules are therefore broader in favor of the assessee. Further, the presumptive taxation regime for non-residents is also now a lot more relaxed, particularly in the case of those businesses or resident companies which are operating in electronics manufacturing facilities, because electronics manufacturing demands supply of components in time, and those specific components will have to be brought in. If time lapses in their supply from the original equipment manufacturer, the production itself will suffer. So we've given them this particular presumptive tax regime, so that the non-residents who participate in these services, particularly given to a resident company, can benefit. So also for the startups, again, which is primarily for the middle class, government has proposed to extend the period of incorporation of startups by 5 years to allow the benefit available to the startups which are incorporated before 1/4/2030. So that's been an extension given so that there's greater participation of the newer registering startups as well. Again, to promote IFSC, the International Financial Services Center, government has proposed specific benefits to ship leasing units, to insurance offices, treasury centers of global companies which set up business in the IFSC. In order that they can claim benefits, the cutoff date of commencement for the commencement in IFSC has also been extended for 5 years, that is up to 31/3/2030. So these are in brief the steps through this finance bill taken up for direct taxation. Now, if I were to briefly look at the indirect tax, as I said earlier, the customs rationalization, tariff rationalization, which was an exercise that we began 2 years ago, every year some or the other rationalization related steps have been announced in the budget. Now, this budget, this finance bill in 2025 relating to the customs aims to rationalize tariff structure and to address duty inversion. These will also support manufacturing units, domestic value addition, promote exports, facilitate trade, and also provide relief to the common people. So that has to be highlighted, because it's not just the new income tax bill which is coming, but this finance bill itself is talking about rationalization of customs, which is a very big step forward so that importers can benefit from it. Exporting industry which import parts can also become cost competitive. So budget 2025, sir, we aim to boost domestic production and enhance export competitiveness by reducing duties on raw materials and inputs, making domestic products
more cost effective, as I said a minute ago. So taking forward the comprehensive review of customs, about which I would like to elaborate, the rate structure announced in July 2024 budget, we are taking that forward. So as I said, the exercise began 2 years ago. We made a major announcement in July 2024 budget. We are taking it further in this budget also. So this finance bill actually proposes to remove 7 customs tariff rates for industrial goods. The 2 tranches of rationalization of customs tariff carried out so far have reduced the number of tariff rates from 21 to 8, including the zero-rated goods. Many Indian exporters have become cost competitive. And one matter which will interest honorable members is when you're looking at cess and surcharge, we made sure that on no one item on the customs duty where it is being imposed, both cess and surcharge would be imposed. We are looking at that, and therefore in this budget, in the finance bill, we have proposed that only one can be applied, and therefore only one cess or surcharge will be applied on any one item. So for instance, social welfare surcharge will be now exempted from 82 tariff lines which are subject to a cess. So the double burden of both cess and surcharge on any particular item is being removed. In addition, sir, we also propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing to the list of exempted capital goods to boost domestic manufacturing. So this will actually have a bearing. So EV battery manufacturing will be a lot more cost competitive because 13 additional capital goods are being exempted. So 28 additional capital goods for the mobile phone battery manufacturing are also being exempted. Sir, we also propose in this finance bill to fully exempt basic customs duty on cobalt powder, waste, the scrap of lithium ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. So this is in addition to the 25 critical minerals which were fully exempted from the basic custom duty in the July 2024 budget. So we have not wasted time. After that, we've rapidly also brought in more goods, particularly critical minerals, into this exemption. So the Customs Act as 1962 does not provide, as it prevails now, does not provide any time limit to finalize provisional assessments leading to uncertainty and cost to trade. So as a measure of promoting ease of doing business, in this finance bill, government has proposed to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. That will itself bring in a lot of certainty for those importers and exporters. Sir, we also propose to extend the time limit for end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. What this actually means is some exporters, in order that they produce goods for export, import some components. The customs duty is not paid because they're bringing it for the production of goods which have to be exported, because we don't export taxes. But for that use of that component which is imported, we normally give 6 months, saying you brought it in June 2025, by December 2025, you should have sent that product out, that product which you manufactured with this particular item imported. Many exporters found it difficult. The 6 months period is not sufficient. So for them, we have extended that time period to 1 year. So this is more an export friendly measure that we have taken. So we have actually allowed the industry to better plan their imports, and also we are providing operational flexibility. So these are as about the finance bill as it was presented to the House. We are of course coming up with some government amendments. The amendments which are being brought, 4 of them I'd like to highlight.
the simplified safe harbor regime in Section 9A for investment funds managed by fund managers in India. Normally, these fund managers are expected to verify uh, that no one exceeds the 5% limit in terms of direct investment or indirect investments. So it is proposed to be made further simpler by removing this 5% condition for monitoring indirect investment, because it becomes too cumbersome for them to search for who the investor is indirectly, and that itself hampers investments, so we are removing that. Clarificatory amendments in the provisions for IFSC's provisions and presumptive taxation for service providers for electronic manufacturing units is also being brought in as government amendment. And the third one, for clarity and consistency, a government amendment is coming in for small changes in the block assessment provisions. And then the 6% equalization levy, which was being proposed, which was in effect for advertisement and other things, is being proposed to be removed, so that we can address the uncertainty in the international economic conditions. So largely, these are the major. Yes, I'll answer. These are my opening statements. I'll come to answering each one of the members' points. I will come to answer. So these are the finance bill related. So then I now come to addressing individual members who have raised issues or sought clarification. So I'll go one by one. By the issue, 2 or 3 members could have spoken on each of the issue. I'll go by the issues. So on the income tax, as I said, members have shown concern for incremental increase over 12 lakhs. What if, I think this was a member, Sri Neeraj Maurya, who had raised this question about if income is 12.10 or 12.20 lakhs, tax will have to be paid. So ensure taxes are graded from 12 lakh rupees is what the suggestion came from Sri Neeraj Maurya. So I want to say that even while I read the budget speech, we made it very clear that marginal relief is being granted. Under the provision of Section 87A, it has been ensured that the tax payable by a person having income marginally above 12 lakhs is required to pay only the marginal amount of tax equal to the amount of income above 12 lakh, so that his carry home is also 12 lakh of rupees. So he may earn incrementally more, but he'll still take back to his home 12 lakhs. And that increment on the incremental amount, the calculation is also very well explained. For instance, with an income of 12.10 lakh, rupees 10,000 is what he earns over the 12 lakh that he already earns. So for that 10,000 rupees, it will be paid as income tax only. Tax without marginal relief on that person earning 12.10 lakh would have been 61,500. So we have given the marginal relief where he, for the 10,000 rupees, he earns more than the 12 lakh. The 12 lakh is exempt from tax, but the 10,000 will have to be paid as tax. He would have ended up paying 61,500, whereas because of the marginal scheme that we've added into this scheme of income tax, he ends up paying only 10,000 rupees. So, and when income of rupees 12.20, only 20,000 will be paid, and he will still take the 12 lakh. Otherwise, the marginal relief, if not given, he would end up paying 63,500 rupees. So the marginal relief has been brought in for the incremental increase in pay. Sir, personal income tax has been reduced by way of rebate. This can be altered in the coming years. It may be done away with in the future years if income tax collection is lower. Was one of the questions asked by an honorable member here. Sir, I can only say, if you look at the track record,
Even during COVID, we did not raise tax. So where we have come up with a rebate in order to benefit the middle class, an element of suspicion is being brought in saying, what if tomorrow you... I'm sorry, sir. Sorry? 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 On petroleum products? Excuse me, sir. I will answer what I've heard till now, but if members want to ask these questions, I will also point out to them. Citizens are our citizens. I have not raised any rates on any item, nor did I increase income tax. But if fuel is being brought to discussion, and that too by honorable member from Tamil Nadu, I will say their manifesto promised. They have not fulfilled their promise, and he is asking me question. Amazing. So, sir, N.K. Premachandran ji has said collections in personal income tax have shown considerable buoyancy in the last few years. His question was, how are you showing income tax collection growth while giving 1 lakh crore revenue foregone? I want to let the honorable member know, N.K. Premachandran ji, the calculations are not done without taking these 1 lakh foregone, income tax reduction. We've spent a lot of time, and most often, in fact, I would want you to please look at the last 5-6 years of the budgets. I've been accused of underestimating, never overestimating, but I've replied each time saying our calculations are realistic. And that is what I will use to explain in answering your question. Collections in personal income tax have shown considerable buoyancy, sir, in the last few years. They have been increasing around 20% year on year. For the year 25-26, the personal income tax projection is 13.6 lakh crores. The RE for 24-25, I'm talking of the projected, which is BE for 25-26, is 13.6 lakh crores. The RE of the year that we are completing, which is completing on 31st March now, is 12.2 lakh crores. So 12.2 lakh and going to a BE of 13.6 is done with a certain realistic calculation. The projection, sir, of growth for 25-26 is around 13.14%. The effective dip of around 7% in personal income tax growth is on account of the factoring in of the revenue foregone, which is 1 lakh. So the dip is already shown for the 1 lakh crore which is being foregone. So the calculation is after showing the dip. And that is why it is a realistic number. So the projected collections for income tax for 25-26 are based on sound data. Sir, income tax receipts So the growth rate question which Shri N.K. Premachandran ji raised, I think I have sort of answered it. I'll now move to the privacy issues which people have raised. Privacy issues, which is not so much the finance bill related matter. It is a matter which is being taken up from the new income tax bill, which is with the select committee. But I want to assure the honorable member that a provision, particularly to look at the data, exists in the current environment, particularly in certain cases of search and seizure authorized by the competent authority, where access code is not available and the person concerned is not cooperating with the proceedings, the authorized officer may gain access to such computer system, exists even now. Now it is now being specifically brought in and mentioned in the new bill because
What is mentioned in the 1961 Income Tax Act is books of account physically kept, and then the ledgers, and every manual record which will show about your income, your expenditure, your monies and all that is specifically mentioned. And since the 1961 Act does not mention the digital, most often it becomes contentious. People go to the court or question, all right, I've shown you my ledger, but why do you want my passcode? So you will see my digital. Becomes an issue. So in order that what prevails now with a gap, that gap is getting filled up in the new income tax, which is before the bill, which is before the select committee. So in this, I will take a minute to explain as to why that digital thing will have to be brought in. Sir, encrypted messages and mobile phones, unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. Now, if the law does not give you the legal backing, in spite of the fact and evidence being in your face, you will have to go stand in the court to say, yes, but the law doesn't provide, but the evidence is here, the money is being misused, it is unaccounted money. It becomes tedious. And therefore, the digital element has to be brought in. I'll bring in one more example, sir. WhatsApp communications and incriminating materials found from such conversations helped to unearth the syndicate and identify the end beneficiaries of bogus bills worth 200 crores. So do I go to the court again saying, but the law doesn't allow me to look at WhatsApp messages? So we need to bring in. There's also another example, sir. Capital gains of 150 crore on sale of land was reduced to 2 crores by creating false documents of land cost of acquisition, and also using all payments in banks statements as claims of investments and improved expenditure. So the WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these evidences which are incriminating in themselves, therefore it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google map history. So in the case of Google map history, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. So one last example for that, sir. The prohibition of Binami properties, Instagram accounts was used to establish the beneficial ownership of vehicles. Expensive vehicles, no ownership details, track it at the going backward and forward. We could break the case by using Instagram. So benefit of technology for the sake of country's exchequer. So then questions about pending appeal cases, that CBDT has poor dispute management and pursues all cases. So I would like to say, sir, in order to reduce the number of pending appeals, several measures have been taken by the CBDT. One such a thing is the enhancement of monetary limits for filing of appeals by the department before the Income Tax Appellate Tribunal, High Court, or the Supreme Court. Creation of new posts of joint commissioners
for appeals exclusively. Also, we came up with the direct tax Vivad Se Vishwas scheme in 2020 and also in 2024. Twice we brought this, and this has helped in reducing the pending appeals. And the famous, or not so famous, repetitive appeal. A new section 158AB is inserted so as to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law pending in appeal before the jurisdictional high court or the Supreme Court, or in any case, the filing of further appeal to the appellate tribunal or the jurisdictional high court in the case of assessee shall be deferred till such a question of law is decided by that relevant court. So that's been a major step in holding the department back, the CBDT back, from going into a case which is already, a similar such case is already in a court. We don't want to pursue it. We'll wait for the final verdict to come from there. So also there was this question by Mohammed Bashir ji, dispute resolution mechanism of department is very poor. So I want to inform the member that the dispute resolution mechanism following the measures that we've taken, provided we've brought in a provision of updated returns, and that's been introduced for voluntary compliance. Sir, I'm sure the honorable members will be aware that we had already enabled updated additional updated returns so that assessees can correct the not declared income when they want to modify their assessments. For within the first year, if you modify and come up, we only say pay 25% additional. And if the second year they come up, we say pay 50%. And these two, first year and second year modified amendments, provisions have actually been well received by the assessees. So we are encouraged to bring in the third year and the fourth year modified assessment provision for the benefit of the tax assessees, that when they came in the first year, they paid only 25%, second year they paid only 50%, third year they will be now given the option to choose, and they can just pay 60% and close the whole business, or the fourth year, if they want to modify, they pay 70%, and that is where the story would end. So the dispute resolution committee has also been constituted. A taxpayer having taxable income of up to 50 lakh and disputed income of up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee for relief, and therefore that element of uncertainty is being removed. E-verification system is also being brought in to increase voluntary tax compliance. E-verification system 2021 was notified in December 2021. I just wanted to highlight that, sir. We carried out a nudge campaign, sir. I'd like to inform the honorable members about it. This is in relation to assets and monies kept abroad. I'm sure the honorable members, many of them would recall that in 2018, my eminent predecessor, Sri Arun Jaitley, had made an announcement in the House that there is an agreement globally now to share information. India will be receiving a bulk of information of Indian accounts being held outside, and every year we shall use that, and where prosecution has to be, or where cases will have to be filed in the court, because not everybody's name and account number which comes in are of people who are holding tax evaded money. They can be genuine accounts also, because the stock that they send, the bulk, the data dump that they give us has everybody's account in it. So using that, we have really been nudging taxpayers, saying we've got this information about your property abroad, about your deposits abroad. Would you want to look at it and come back to us? That has actually helped us, and I'd like to highlight how. We nudge the taxpayers to voluntarily disclose their foreign income and assets. SMSs and emails were sent to around 19,501 select taxpayers, asking them to review their income tax returns
filed for the year 24-25 based on the information available on the income tax about their foreign deposits. The result of that campaign, I'm happy to share with the honorable members, out of 19,501 taxpayers, a total of 11,162 taxpayers revised their returns and filled scheduled foreign assets form and declared an total assets of 11,259.29 crores, disclosing foreign income of also 154.42 crores. So the nudge campaign about properties abroad which have never been disclosed have been, because of the campaign, successfully at the ease of the tax assessee been declared, and also the monies due have been paid. In addition to this above, 883 taxpayers reviewed their IT returns and corrected their status from resident to non-resident. Even that correction happened because we were able to give them the facts and ask them to either accept or give us a reply about it. So in their revised return for the year 24-25, they have said, no, they are not residents, but they should actually be treated as non-residents. So due to this outreach, there was a ripple effect, sir. This resulted in an addition of 13,516 taxpayers declaring foreign assets worth 7,564 crores and foreign income of 353 crores, or approximately, that is, in their revised return for 24-25. So cumulatively, this simple nudge has resulted in declaration of foreign assets worth 29,208 crores and foreign income up to 1,089 crores in the Schedule FA by 30,161 taxpayers. So this attempt by the Government of India to make sure people who have not declared their assets can now declare it by us taking a proactive nudge-based approach. So I'm very happy that this step is being responded well by the assessees as well. Sir, I've already probably said enough on the TDS, but I just want to say one line. So the two pillars of TDS related problems are non-filers and the search for the valid PAN number. So this finance bill, we have proposed to omit the section 206AB and section 206 CCA, under which higher rates of TDS and TCS were levied in cases where the deductee or collectee were non-filers. Most often, non-filers were the ones on whom action had to be taken because they collected the TDS but did not deposit with the government's account, or they did not show because PAN and Aadhaar card linkages were not available with them. So we have very clearly said, in order to reduce the compliance burden, particularly for very senior citizens, certain non-residents, etc., we have clearly kept on the PAN and Aadhaar, we have kept the non-residents and also senior citizens out, and this provision has also been brought under the omission category. So there was this question by several members, Vishal Dada Patil, Shri Vishnu Prasad, and also Shri Mohammad Bashir, as to why the two tax regimes should continue to run parallel. I just want to say, sir, it is a stated policy of the government to phase out exemptions, deductions, and other incentives, while at the same time gradually reduce the tax rates. And we have provided as an option rather than a forceful decision to say we are shutting down the open. We are not. We are running both in parallel so that people who benefit from the old regime can please continue to be so. I am not
drawing them to the new regime till such a time they either have exhausted all the exemptions or they choose to come here because of the rates. So that is why both the regimes continue. Sir, Shri N.K. Premchandran ji spoke about why did you have to reduce the corporate tax? It is only benefiting the large corporates. That's not true, sir. It benefits many companies which are medium-sized and middle as well. But has it benefited India? Yes, it has. According to the World Investment Report 2023, India was the third largest recipient of greenfield investment projects globally, with about 1,008 greenfield projects announced. Additionally, the number of international project finance deals in India rose by 64%, making India the second largest recipient of such deals. So investments come, they create more jobs, entrepreneurial opportunities are available for middle class. All this has been made available because of the corporate tax reduction. Sir, so I want to just highlight the fact that, on GST related issues, sir, several members spoke about issues related to GST. I just want to highlight, sir, that the allegation that the GST is not progressive is absolutely unfounded. It is not true at all. I would like to highlight how, sir. Wealthiest 20% of Indians contribute 41.4% household GST and 14% of the total GST. That is, wealthiest 20% of Indians contribute 41.4% of household GST and 14.2% of the total GST, while the bottom 50% contributes just 28% of household GST and 9.6% of the total GST. So this argument that it is not progressive is not right at all. The poorest 50% face an average effective GST rate of 7.3% only. Under the pre-GST regime, sir, the average indirect tax rate was around 15%, whereas as of March 2023, after the GST has been introduced, the average GST rate is just 12.2%. At the time of introduction, it was 15. In pre-GST, it was 15. Now it is only 12.2. Sir, I've repeatedly said several times that the taxes on ordinary people's daily use products are far lower. It have been brought down. I'm not going to take this August House's time by reading the list completely. I will probably put it on the table for any member to look at. NIPFP, a big research center, shows that the most consumer items face low or no GST taxes at all. Less than 3% of common consumption items attract the highest rate of 28%. So 28% tax is on only less than 3% of common man consumption items. Nearly 60% of consumption items face 5% or lower GST. So GST is exempted on several items, and I would like to broadly categorize them: unbranded food items, certain life-saving drugs, healthcare, education, public transport, sanitary napkins, hearing aid parts, agricultural services, etc. are completely exempt. So, several members seem to have said no discussion on reducing GST and reduce the number of slabs in this parliament. So the GST Council is a constitutional body. That's where the discussion happens. And subsequent to the decision taken by a group of ministers, and in that group of ministers, finance ministers of Bihar, UP, Rajasthan, West Bengal, Karnataka, and Kerala are all members of the committee. They are deciding on how to reduce GST and also reduce the number of slabs. Post that, if there are any amendments to be made in the CGST, we will come here. So the discussion on the reduction can be a part of the general discussion, but the actual discussion and the decision happens at the GST Council. So, sorry.
Yes, yes. Yeah, HSN code is something which the council will have to work with the authorities who decide on the codes. Sir, 5% GST is imposed on muscular atrophy drugs, where the cost of the drug is 80 lakhs for 1 year. This was Srimati Sangeeta Roy from AITC. I just want to highlight, sir, that the IGST on import of drugs for rare diseases, including muscular dystrophy, has been fully exempted when imported by the patients for personal use. So there cannot be a GST on it. So I just want the member to please hear this. Once again, I'll repeat that the import of drugs, the IGST on such imports for rare diseases, including muscular dystrophy, has been completely exempted for patients for their personal use. Second, they are also exempted for person or institution which are recommended under the listed centers of excellence for their research or for any other testing. So they're all exempt, sir. So they were questioned. Hibby Aiden had raised this question about how Lord Ayyappa's Prasadam has been put under GST. And also talking about food prepared, like rice dumplings, are also under GST. I just want to say, sir, prasadam supplied by religious places, like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, are completely exempt from GST. I want the honorable members to kindly take note of this. They're completely exempt from GST. Sir, as regards reducing the rates on items in which the tax is being levied, as I said, there is a GOM which is looking into it, particularly for the food sector related queries. The GOM will take a call. So then 18% GST on prosthetics is insensitive. Reduced GST on prosthetics and life-saving equipment was observed by one of the members. I just want to say, sir, from 2017 to 2022, like as it was before, the prosthetics attracted 12% GST till 22. Then in the 47th GST Council held in June 2022, the GST rate was reduced to 5%. Life-saving medical equipments, most medical devices such as X-ray apparatus, alpha, beta, gamma radiations for medical surgery or veterinary purposes attract concessional GST rate of 12%. Artificial parts of the body attract 5% only as GST. So I just want to be clear that GST is not levied on certain critical life-saving equipments. So there was this question about Suksham Sinchai, the micro irrigation. Devesh Shakya, member, asked this question. The GST rate on drip irrigation systems, including lateral sprinklers and products, has been reduced from 18% to 12% as per the decision taken by the 25th GST Council meeting on 18 January 2018. On the GST cess, there was a DMK member, Malayarasan, sorry, the spelling is wrong here. Malayarasan ji had asked this question on GST compensation, sir. I think I've answered this question several times. GST compensation, first of all, let me make it clear. There is no due whatsoever to states on GST compensation. When they have sent the utilization certificate or audited certificate, not utilization, the auditor's AG's certificate, everybody's money has been given. The law itself says that after June 30th, 2022, there's no compensation cess. So we're not collecting.
What we are collecting now is actually being collected to repay the debt that was taken during the COVID time. When there was no income to share, we had to borrow to give the states, and that is what is being collected now, and that's also should be ending by early 2026, which is another 7-8 months. So on the GST or insurance, again, the GOM is looking at it, and they will come with a decision, and that can be taken up by the GST Council, so I'm not elaborating much on it. So GST, again, like the temples, there has been this question about, are you levying GST on education and healthcare related items? Again, I want to explain, sir. Following are the exemptions that are already provided to the education sector. Services provided by an education institution to its students, faculty, and staff are completely exempt. Services by an education institution by way of conduct of entrance examination is exempted. The following services are also exempted. Services related to admission to or conduct of examination by such institutions are exempt. If provided to preschool or up to higher secondary schools, any service, such as transportation of students, transportation of faculty and staff, catering, including midday meal schemes sponsored by the central government or state government or the union territory, security or cleaning or housekeeping services performed in such education institutions are all exempt from GST. Supply of online educational journals or periodicals are exempt, and that is also provided for higher education institutions. Educational institution has also been defined. I just want to clearly say, so what is an educational institution? Defined as an institution providing services by way of preschool education, education up to higher secondary school, or equivalent education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law for the time being in force, and education as a part of an approved vocational education course. Similarly, sir, when it comes to health, GST is fully exempt on healthcare services provided by a clinical establishment, an authorized medical practitioner, or a paramedic, and healthcare services includes diagnosis for illness, injury, etc., in any recognized system of medicine in India, and that's been clearly stated in the Central Act as well. So there was this question about reduction of GST on agricultural inputs. I just again want to explain, sir. Seeds attract zero GST. There's no GST on seeds. 5% GST on fertilizers. Agricultural implements, manuals, manually operated or animal driven, and hand tools attract zero GST. And then tractors attract 12% GST. Agricultural pumps attract 12% GST. So a proposal to reduce GST on farm inputs like tractors from 12% to zero, farm inputs like drip irrigation system, other agricultural equipment, pesticides, fertilizers to zero was placed on the 45th GST Council meeting held on 17th September 2021, but the Council did not recommend it then in 2021. I want to just put that on record, but of course, now the group of ministers is looking into it. So the items will be looked at by the GOM and they will take a call, sir. Sir, there were several other questions related to the budget, not so much on to the finance bill. So I'm not taking those except for the proposal. So there were just one thing on which, although it doesn't relate to the finance bill, I will seek your indulgence. I'd like to answer this.
Again, issue raised by Sri Neeraj Maurya about benefits to the vulnerable sections, SCs, STs, OBCs in the government initiatives. I will have to list them out, sir. Please give me that few minutes. Sir, under PM Kisan, around 76% of the farmers are SC, ST, and OBC. I'm not sure if Neeraj Maurya ji is here, but I can see his party members being here. I hope you convey this to him. Under PM Awaaz Urban, in the last decade, 1.18 crore houses have been built for the poor. Of that, 1.18 lakh crores is 1 crore and 18 lakh. 42 lakh have gone for OBCs, and 23 lakh houses have gone for scheduled castes. 60% of the houses under the PM Awaaz Yojana Gramin have been given to SC STs. 33% of the loans under PM Mudra Yojana have gone to SC ST OBC led enterprises. 70% of the beneficiaries under PM Swanidhi are SC ST OBCs. Stand Up India schemes, sir, which are helping the SC and ST entrepreneurs, 7,000 crores have been disbursed as loans for SC, STs. 65% of the loans under PM formalization of micro food processing enterprises is gone for SC, STs. And October 24, Honorable PM launched the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan to address critical gaps in the social infrastructure, health, education, and livelihood development in 63,800 tribal villages. And then the Janjatiya Gaurav Divas in 2023, which was announced, PM Modi launched PM Jan Man for targeted support to 75 particularly vulnerable tribal groups for whom they are residing in 18 states and one union territory for safe housing, clean drinking water, education, health, road and telecom connectivity, electrification, and sustainable livelihoods. I seek your indulgence, sir. I would not go further explaining more. For those non-budget related questions which honorable members have raised, the benefits of PLI scheme and so on, I'm not elaborating more. KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006,
in March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I'm not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. Thank you. Well, if you can cast as, yes, if you've done several wrong, we talk about it. We don't shy away. We don't shy away. But this decision, which was, I don't need to hide. I'm saying it openly. I'm saying it before you. If it wasn't in the court, I would have done it earlier. Thank you, sir. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री डीन कुरियाकोस संशोधन संख्या 1 से 4। प्रश्न ये कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संख्या 1 से 4 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में ना कहें, सर मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, ना कहें, सर मूव नहीं कर रहे ना, मूव नहीं कर रहे सर। वालों के संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री स्वागत राय संशोधन संख्या 65 से 72। Sir, I move my amendments. Page 4, line 7 to 7. प्रश्न ये कि श्री स्वागत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 65 से 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25। Sir, I move the 1 minute, sir. I move the amendment, sir, number 25. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।
प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 26, 27। So I move the amendment number 26 and 27. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 और 27 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 28 से 23। 33. Sir. So I 28 move से the amendment number 28, 29, 30, 31, 32 and 33. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 से 23 को स्वीकृत किया जाए। 28 से 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 73। Sir, I move amendment number 73, page 30, a substitution clause for lines 4 to 8. Sir, I would like the finance minister to clarify that the Americans are saying that the tariffs should be equalized. American team has arrived in Delhi. प्रश्न ये कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न के खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। सौगत राय जी, संशोधन संख्या 74। Sir, I move amendment number 74 on page 30. प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 74 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 3 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 34। So I move the amendment number 34. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 11 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35 और 36। So I move the amendment number 35 and 36. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 और 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 13 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 75। Sir, I move amendment number 75 on page 34. प्रश्न है कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 17 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 17 से 9 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37। I move the amendment number 37. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 76। Sir, before I move the amendment number प्रश्न ये कि 76, sir, सौगत राय जी द्वारा बोल ले। प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों पर संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 20 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 20 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 21 और 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 और 22 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 38 को प्रस्तुत करें। 38। Sir, I move the amendment number 38. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 22A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 22A विधेयक में जोड़ा गया। प्रश्न है कि खंड 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 23 विधेयक का अंग बने। श्री डीन कुरियाकोस, श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 6। Sir, my amendment is regarding changing in the income tax slabs table. That table may be accepted. I am moving the amendment. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहे, जो इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। सौगत राय जी, संशोधन संख्या 77। Sir, before I move amendment number 77 on page 38, lines 14 to 28, let me state प्रश्न that है कि this सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 77 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वहां के, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 24 से 36 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 24 से 36 विधेयक अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39। I move the amendment number 39. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 37 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 78। Sir, I move amendment प्रश्न number. ये कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 78 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 40 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 40 को प्रस्तुत करें। So I move the amendment number 40. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 40A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 40A विधेयक में जोड़ा दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 41। So I move amendment number 41. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 42 से 44। So I move the amendment 42, 43 and 44. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 से 44 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करें। 45। So I move the amendment number 45. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 48A 48B विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 48A 48B विधेयक में जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 46। So I move the amendment number 46. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 47 और 48। I move the amendment number 47 and 48. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 और 48 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 50 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 49 को प्रस्तुत करें। So I move amendment number 49. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में वह संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 50A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 50A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है खंड 51 से 58 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 51 से 51 विधेयक का अंग बना। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 79। Sir, I move the amendment number 79. The प्रश्न American है sir, कि आप थोड़ा ख्याल रखिए, वो हमारा सब टैरिफ कम कराएगा। प्रश्न है कि सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 79 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 59 से 140 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 से 140 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करें। So I move the amendment number 50. श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 80। Sir, before moving the amendment, I would like to raise a very serious point of order. Under Rule 219 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lokshaba, and under Article 110 and 117 of the Constitution of India.
So the proposed amendment by the Honorable Minister by virtue of amendment number 50 is the amendment to the Finance Act and amendment to the validation of the Central Civil Service pension rules and principles of expenditure on pension and liabilities from the Consolidated Fund of India. That means this is a matter relating to the pension rules. It is nothing to do with the Article 110, 1A or 1A to G and F of the Constitution of India. Sir, what is Article 110, 1A? So many times this House has debated on this issue. That is what is called a money bill. 110, 1A, it is very specific and clear that a money bill can be introduced only in the House of the People. Sir, I would like to quote 110 definition of a money bill. For the purpose of this chapter, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. I would like to stress the word only. What are the matters? The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, the regulation of the borrowing of money, the custody of the consolidated fund or contingency fund, the appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India, declaring any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India. And the last portion, that is the portion that is G, any matter incident to or any of the matters specified in subclause A to F. Sir, this is the provision which is invoking by the Honorable Minister so as to put this amendment. There, I would like to relay one Kaulan sector. It is very clear that in Kaulan sector, it is specifically mentioned. Sir, one second. Regarding the Kaulan, and it is updated version. It is also updated version. It is very clearly stated that money bill and financial bill is well distinguished. So I will quote one page 792 of the Kaulan sector. However, finance bill, however, it does not contain any provision intended to make permanent changes in the existing laws unless they are consequential upon or incidental to the taxation proposals. I would like to underline unless these are consequential upon or incidental to the taxation proposals. Sir, here what is the amendment? The proposed amendment is that is already the ministry has replied. Sir, one second. That is a matter. Through this amendment, I would like to highlight the matter. The thousands and lakhs of pensioners in the country, they are entitled to get the pensionary benefit in the revised Central Pay Commission. Suppose after 2026, the last pay commission. Sir, one second. Suppose it is not being applicable to the. So my point is, sir, this is suppose if you are allowing this amendment to be incorporated in the Finance Bill 2025, the character of the money will be changing. That is not applicable. There is a Supreme Court judgment of 2019. It's very specific. So the point of order may be clarified and it may not be allowed. That is my point of order. And subsequently, I will move the amendment. N.K. प्रेमचंद्र जी ने जो विषय उठाया है, रूल्स 219 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल्स 219 में गैर कर प्रस्तावों को शामिल करने की संभावनाओं को नकारता नहीं है। इसलिए एक वित्त विधेयक में गैर कर प्रस्तावों को भी शामिल किए जा सकते हैं। अतीत में कई बार ऐसी हो चुकी और ये परंपरा भी रही है। इसलिए मैं माननीय प्रेमचंद्र जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको निरस्त करता हूं। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 141, 142, 143, 144, 145 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 141, 142,
143, 144, 145 विधेयक में जोड़ दिया गया है। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 7 से 22। Sir, there are 16 proposed amendments, 16 amendments to first schedule. Out of which I would like to make only one point. That is, Okay. sir, regarding 10% is the tax at the deduction at the source. Let it be 3% for the प्रश्न ये कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 23 और 24। Sir, these are two amendments to third schedule. Sir, one second. Cashew industry is facing severe crisis. Import duty on cashew. प्रश्न ये है कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 और 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत है। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 51 से 59। Sir, I move the amendment number 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 51 से 59 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि तीसरी अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में तीसरी अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न ये है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में कई नए खंड जोड़े गए हैं। इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों का तदनुसार पुनः क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिए जाएं। माननीय सदस्यों, बीएससी की बैठक में अनौपचारिक रूप से ये चर्चा हुई थी कि 29 मार्च शनिवार को भी सदन चले, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सभी दलों के नेताओं ने आग्रह किया कि 29 तारीख शनिवार को सदन की कार्रवाई नहीं चले तो उचित रहे। सभी दलों के आग्रह पर 29 मार्च शनिवार को सदन की कार्रवाई जो पूर्व में जिसका बुलेटिन जारी किया था वह निरस्त कर दी गई है। 29 तारीख को सदन की कार्रवाई शनिवार को नहीं होगी। आइटम नंबर 16 बॉयलर विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Respected sir, with your kind permission, I move that the Boilers Bill 2024 to provide for the regulation of boilers, safety of life and property of persons from the danger of explosions of steam boilers and for uniformity in registration and inspection
during manufacture, erection, and use of boilers in the country, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. श्री कल्याण काले हैं? यस। माइक चालू। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जो मंत्री जी है सम्माननीय पीयूष गोयल साहब ने जो बॉयलर के बारे में कानून का बदलाव लाने का बिल हमारे सामने पेश किया है, वो बिल पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो एक बात अच्छी है कि द इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 का इतना पुराना एक्ट हमारे देश में आज तक चल रहा था और आपने ये बदलने का प्रयास किया। मैं पहले तो आपको धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन वो धन्यवाद देते देते उसके अंदर जो कमियां है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बात बताना चाहूंगा। जबकि बॉयलर बिल जो है ये किस लिए हम ये कानून बनाते हैं या ये विधेयक क्यों लाया है, जिस कानून के अंदर 8 अगस्त में राज्यसभा में ये दाखिल किया था, आज अब लोकसभा में भी आया है और वो विधेयक के अंदर आपने कुछ बातें की तो जरूर है, लेकिन कुछ बातों में कोई अस्पष्टता है जिसमें लेकर के मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा कि जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में खास तौर से बॉयलर की इंस्टॉलेशन सिस्टम बिठाने का काम होता है और उसको कानून के दायरे में लाया जाए, उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा जाए और वो फैक्ट्री के सेफ्टी के बारे में, कानून के बारे में उसकी सर्टिफिकेशन रेगुलर होते जाए। इसलिए उसका रिन्यूअल होता है क्या, वो रिन्यूअल होने वाला है क्या, कितने दिन में होने वाला है, इसकी कुछ अस्पष्टता इस मुद्दे में है। मैं जरूर आपको आगे के उस मुद्दे के बारे में आगे बताना चाहूंगा। जो मुद्दे हैं सुरक्षा के लेकर के कुछ अस्पष्टता मैं आपके सामने उस कानून में बताना चाहूंगा। ये जो विधेयक है कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार ने कुछ चीजों के इसके अंदर दायरे में छूट गई है और कुछ छूट देने की अनुमति दी है और उसमें हमारा ये तर्क है कि इस छूट में छूटने वाले क्षेत्रों में बॉयलर की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी, इसलिए कुछ चीजें यहां इसमें से छुटी है, खास तौर से सेफ्टी के बारे में और जिसमें दुर्घटना बढ़ने का ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, संभावना हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये सेफ्टी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है या उद्योग है, वो छोटे उद्योगों पे भी ज्यादा बोझ आपने इस बिल में डाला है। अब जैसे नए सर्टिफिकेशन लेने की जब जरूरत पड़ेगी, नया सर्टिफिकेशन जब हम लेने को जाएंगे, रिन्यूअल करने को जब जाएंगे, तो बॉयलर की मरम्मत करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो छोटे छोटे जो एमएसएमई जैसे छोटे छोटे उद्योग है, वो आदमी कहां से एक बॉयलर अटेंडेंट हमेशा के लिए अटेंडेंट रखना बात अलग है, मरम्मत करने के लिए भी आदमी रखेगा तो कब से कैसा रख सकता है। इसलिए वो छोटे उद्योगों पे इसका बोझा पड़ने वाला है, उसका अतिरिक्त खर्च है, प्रशासनिक परेशानी बढ़ रही है और कुछ कहां ऐसा भी कहा जाता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य के ये खिलाफ भी है। इसलिए मैं मंत्री जी से दूसरी बात और तीसरी बात ये रखूंगा पर्यावरण के बारे में। उसके बारे में इसमें बहुत बड़ी मुझे चिंता लग रही है कि पर्यावरण के बारे में आपने इसके अंदर बॉयलर से निकलने वाला जो उत्सर्जन है, जो प्रदूषण होने वाला है, उसके बारे में नियंत्रित करने के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान आपने उसमें नहीं रखा है। इसलिए पोल्यूशन के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि औद्योगिक बॉयलर होने के
जो होने औद्योगिक बॉयलर से जो होने वाला प्रदूषण है एक बड़ा मुद्दा है और इसकी अनदेखी आलोचना इस बिल के अंदर हुई है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये विनंती करूंगा, कुछ बातें इसमें करने की आवश्यकता है। जैसे हम जुडिशियल बारे में सोचेंगे, जुडिशरी के बारे में न्यायिक चुनौती क्या है, उसमें क्या कमी रखी है। इस विधेयक में केंद्र या राज्य सरकार ने नियुक्त के वाला जो इंस्पेक्टर होगा, जो बाबू होगा, जो निरीक्षक होगा, उसके फैसले के सामने अदालत में चुनौती दी। अब पहले हमारी जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री में हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी जाकर के उसकी चुनौती देते थे, अपील अथॉरिटी के पास, अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाते थे। अब आपने उसमें कर दिया है, हाई कोर्ट के सिवा आप कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये फिर एक बार गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा, ये जो न्यायिक चुनौती इस बिल के अंदर अधूरी रही है, उसके बारे में भी आपने सोचने की जरूरत है। ये भी मैं आपसे इस बिल के बारे में कहूंगा। रही बात हमारे जो निरीक्षक आने वाले हैं, उसको अनगिनत अधिकार दे के रखे हैं। अब ये इंस्पेक्टर आएगा और आने के बाद वो परिसर में कब आने वाला है उसको कोई पता नहीं, वो अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसके लिए कोई सुरक्षा का उपाय, वो आएगा, उसके लिए सेफगार्ड क्या है, वो लाने वाला है या नहीं है, इसके वो अधिकारी उसका अधिकारों का दुरुपयोग करने का आशंका इसमें जताई, उसके त्रुटियां वो दूर करने की जरूरत इस बिल के अंदर है। उसके साथ साथ समय सीमा का भी अभाव है। जो सीमा हमें उसमें समय की सीमा दी है, बॉयलर की जांच, बदलाव, मरम्मत, उसकी मंजूरी, एक विधेयक में कोई निश्चित सीमा समय तय किया गया नहीं। इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है और कभी कभी कोई फैक्ट्री वाले जो मरम्मत करने का जो पीरियड दिया गया है, 1 साल में करनी चाहिए, 6 महीने में करनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महाराज कि ये जो समय सीमा का जो अभाव है, उसके बारे में यदि अनदेखी की गई तो कोई इंडस्ट्री 6 महीने में उसका रिन्यूअल करना चाहिए या 12 महीने में करना चाहिए, उसकी कोई ये नहीं रहेगी। इसलिए मैं वो भी त्रुटियां इसके अंदर है, वो मंत्री जी से बताना चाहूंगा। दूसरे साथ साथ कुछ राज्यों ने क्या किया है, सेल्फ रिन्यूअल का, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक हमारे प्रावधान अपने अपने राज्यों में दिया गया है, वो अनुमति दी है। लेकिन इस विधेयक के अंदर उसको बढ़ावा नहीं दिया। सारे प्रशासनिक अधिकार प्रक्रिया आसान होने के बजाय जटिल हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये भी बात कहूंगा कि यदि वो प्रावधान रखा जाए कि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन भी किया जाए, वो यदि हो जाता है और जस्ट उसकी एक विजिट हो जाए हमारे बाबू की या इंस्पेक्टर की, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुरक्षा प्रावधानों की भी कुछ अपर्याप्त उस बिल में लग रहा है। विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों के सुरक्षा के बारे में जो प्रावधान चाहिए, इसीलिए बिल है, लेकिन इन्हें कैसा लागू किया जाए इसके बारे में कोई स्पष्टता है, कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए उदाहरण के लिए मैं योग्य और सक्षम व्यक्ति की परिभाषा और उनके परीक्षण का विवरण नहीं है। कौन सा आदमी रहेगा, क्या टैलेंट उसका रहेगा, क्या वो लिखाई पढ़ाई करके आने वाला रहेगा, उसके बारे में कोई प्रावधान करके रखा नहीं है। ये भी एक बात है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान नहीं दिया है। जैसे भारत में अलग अलग क्षेत्र में जलवायु है, औद्योगिक जरूरतें हैं, संसाधन है, अलग अलग जगह ये विधेयक इन विविधताओं के ध्यान में नहीं रखता है। ये कुछ जगहों पर अव्यवहारिक हो सकता है। कोई जगह जैसे हमारे महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री है, उसके अंदर अलग चीज है। ऐसे कुछ अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कुछ कानून उसके अंदर आने चाहिए थे, वो उसमें नहीं है। आखिरी पे आता हूं मैं, जिसमें जुर्माना असमानता है। जुर्माना जब कोई एखादा इंडस्ट्रियलिस्ट उसके अंदर रिन्यूअल करते समय या फैक्ट्री एक्सीडेंट में कुछ आरोपी या दोषी पाया गया, तो उसके बाद भी उसको क्या जुर्माना लगाना चाहिए। अगर कोई छोटी गलती हो, एमएसएमई का यूनिट हो और वो यूनिट के अंदर
तो छोटा जुर्माना लगाने का उसमें प्रावधान नहीं, सख्त से सख्त बड़ा से बड़ा जुर्माना। कोई करोड़पति फैक्ट्री वाला हो उसको भी उतना ही जुर्माना, और छोटा एमएसएमई वाला भी उसको भी उतना ही जुर्माना। ये भी उसके अंदर उसका कोई प्रावधान किया गया नहीं है। ये अन्यायकारक हो सकता है, इसलिए उसके अंदर जुर्माने के बारे में भी उस कानून में स्वीकार्यता कम लग रही है, उसमें बताना, वो बड़ा अमेंडमेंट करना जरूरी है। अब उसके साथ साथ मैं एक बात और जाते जाते बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, बॉयलर बिल 2025 अगर औद्योगिक बॉयलर से संबंधित है तो इसे छोटे उद्योग, पर्यावरणवादी और श्रमिकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसकी कमियां को दूर करने के लिए सरकार को स्पष्ट नियम, व्यावहारिक कार्यान्वयन और सभी पक्षों से चर्चा की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहूंगा, अगर आपको इस विधेयक के किसी खास पहलू जैसे नियम, प्रभाव, उद्देश्य के लिए बारे में और जानने के हेतु कुछ काम हमें भी बताए, हमें भी हमारी मदद मांगे तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि ये बिल को अभी कुछ दिन के लिए रोका जाए और उसमें सारे पार्टियों के सांसद का कुछ उनका राय लिया जाए और उसके बाद ये विधेयक लाया जाए। ऐसा मैं आपसे अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा और फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय जय श्री हिंद, जय राजकुमार महाराष्ट्र। चाहत जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं सदन में आपके माध्यम से बॉयलर अधिनियम 2024 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 1923 से चलकर आज 2025 हो गई। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो औद्योगिक क्रांति के अवसर पर 1923 में यह अधिनियम लाया गया। अब वर्तमान में और 100 वर्ष में पूरा एक दशक बीत गया, 100 वर्ष से ज्यादा हो गए। तो यह आवश्यकता थी कि अनेक प्रकार के ऐसे नियम जो अवांछनीय हैं उनको दूर किया जाए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए श्रमिकों के हित में, उद्योग के हित में, व्यापारी के हित में, संपत्तियों के हित में एक नया अधिनियम लाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2014 जब से सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, तो लगातार ऐसे अनेक प्रकार के नियम, कानून, अधिनियम, उनमें संशोधन करना, अनेक अवांछनीय, जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय पर जो नियम लागू किए गए थे, जो भारतीयों पर दंड के अनुसार दिए गए थे, जो न्याय की तरफ बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। और उसी के अंतर्गत 2 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बॉयलर अधिनियम के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद हमारे मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जी ने राज्यसभा में इस विधेयक को रखा अगस्त में, और दिसंबर में ये राज्यसभा से पारित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो अधिनियम है ये बहुत आवश्यक है। श्रमिकों की सुरक्षा ये मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप देखते हैं कि जो हमारे बॉयलर सिस्टम्स में, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन के क्षेत्र में हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो, अनेक क्षेत्रों में इस्पात और पेट्रोकेमिकल्स, इसमें इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं। अनेक प्रकार के विस्फोट हो जाते हैं, अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए एक नया अधिनियम लाना, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब सुरक्षा की बात आती है तो आप जानते हैं कि जब श्रमिक कोई जाता है काम करने तो उसकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। श्रमिक हमारा सुरक्षित रहे, और जो बॉयलर्स के लिए जो टेक्निकल टीम होनी चाहिए जिसको वो मरम्मत भी कर सके, उसके लिए योग्य हो, सुयोग्य हो, सक्षम हो, यह भी जरूरी है कि समय समय पर हम उसका निरीक्षण भी कर सकें। और उसके लिए आवश्यक है कि एक नया रजिस्ट्रेशन हो, और हर वर्ष का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको रिन्यूअल होते रहना चाहिए, जिससे
लगातार लगातार उस पर यह दृष्टि बनी रहेगी कि आज हमारे बॉयलर की स्थिति क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बॉयलर के विस्फोट पहले हुआ करते थे, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, लोकसभा में पारित होने के बाद, उनमें निश्चित रूप से आने वाले समय में कमी आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो पुराने मानकों के आधार पर जो अधिनियम चल रहे थे, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत की बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये आवश्यकता है कि एक नया कानून बने। बॉयलरों का निर्माण, निरीक्षण, पंजीकरण, संचालन, सुरक्षा के मानक बेहतर बनाए जाए। यह विधेयक औद्योगिक दुर्घटनाओं को भी कम करेगा और वहीं पर बॉयलरों की रखरखाव और निगरानी की ओर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक में इसको 6 खंडों में, इस अधिनियम को 6 अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के अध्याय उससे जोड़े गए हैं और इसमें 1923 के जो अनावश्यक अप्रचलित जो प्रावधान थे उनको हटाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये इसके लिए एक केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का भी गठन किया गया। केंद्रीय बॉयलर जो बोर्ड होगा वो आने वाले समय में कुछ नियम बनाएगा। उन नियमों के साथ, राज्यों के साथ वो उसका परस्पर संबंध भी रहेगा और साथ में श्रमिकों की कल्याण के लिए और जनता के श्रमिकों का कल्याण, जनता का कल्याण, इसको सुनिश्चित करके औद्योगिक विकास में समर्थ हो सकेंगे। कोई भ्रम न रहे, इससे बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में आपस में पारस्परिक समन्वय की भी आवश्यकता इसमें रहेगी। जो हमारा केंद्रीय बॉयलर बोर्ड बनेगा वो उसकी देखरेख की व्यवस्था करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वर्तमान कानून में 7 अपराधों में से 3 को अपराध मुक्त किया गया है, जो कि देश में बॉयलरों की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित नियमों में एक रूपता बनी रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि देखने में आता है कि कई बार अनेक प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, विस्फोट भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि जो गंभीर दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये कानून लाना बहुत आवश्यक था। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उद्योग क्षेत्र के लिए, व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के हित के लिए ये कानून लेकर के आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंतर्गत यह भी है कि जो निर्णय किया गया था कि जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक सुधारों का हिस्सा है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आधुनिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत बॉयलरों के पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटाइज किया जाएगा, जिससे तेजी से निरीक्षण और प्रमाणन किया जा सकेगा। इसके अंदर सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई और इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की भी व्यवस्था की अनुमति होगी, जिससे व्यवसायियों को बेवजह लाल फीताशाही से बचाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस विधेयक में व्यापार को आसान बनाने के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर छोटे और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई को सरल लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करेगा और नए उद्योगों को स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। अध्यक्ष जी, इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में बढ़ी है। दुनिया भर के इन्वेस्टर भारत में आए, उसके लिए आवश्यक है कि नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था, नई सुरक्षा के इंतजाम उनके अनुसार जो वो चाहते हैं वो उनको भारत में मिलने चाहिए। तो ये सारे प्रावधान हमारे इस बिल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिल हमारे मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने पेश किया है, उसमें सभी इसके अंतर्गत निहित है। माननीय अध्यक्ष जी, बॉयलरों की सुरक्षा और संरचना के जुड़े होने के लिए मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि इसकी संरचना, संचालन, रखरखाव और निरीक्षण से संबंधित नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, जो श्रमिकों की भी सुरक्षा करेंगे, संपत्तियों की भी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि जब बॉयलर में विस्फोट होता है तो श्रमिकों की भी जान चली जाती है और अनेक संपत्तियां भी विस्फोट के कारण ध्वस्त हो जाती हैं। अध्यक्ष जी, इसमें
राज्य सरकारों को छूट भी दी गई है। राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ अदला बदली कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके अनुसार राज्य सरकार को भी विशेष परिस्थितियों में बॉयलर अधिनियम 2024 में उनको कुछ अधिकार दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, इनसे राज्यों को अपनी औद्योगिक नीतियों के अनुसार निर्णय लेने में भी स्वतंत्रता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, व्यापारिक प्रक्रिया में सुधार होगा, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जब विदेशी निवेशक आएंगे और उनके अनुसार हमारी व्यवस्थाएं होंगी जो वो चाहते हैं, तो निश्चित रूप से विदेशी निवेश भी आएगा, इससे रोजगार भी मिलेगा, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो ये जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है, मैं कह सकता हूं सदन में कि 100 वर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी का शासन लंबे समय तक रहा, लेकिन 1923 के बाद केवल 2007 में कुछ संशोधन उन्होंने किया था जो पर्याप्त नहीं था। उससे इस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी कभी अंग्रेजों ने बनाई थी और अंग्रेजों के बनाए नियम ही 1923 से चले आ रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। लंबे समय के शासनकाल में वो बस देखते रहे और संशोधन किए भी उन्होंने तो अपने लाभ के लिए संशोधन किए, कभी देश के लाभ के लिए, जनता के लाभ के लिए, व्यापारियों के लाभ के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए कभी उन्होंने संशोधन इस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नहीं किए। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि आज भारत में सबसे तेज गति से एमएसएमई सेक्टर का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, वहां रोजगार भी लोगों को मिल रहे हैं, हमारे नए स्टार्टअप भी लोग शुरू कर रहे हैं, सरकार उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रही है, उनके आर्थिक क्षेत्र में मदद कर रही है। और अभी हमारे बजट के दौरान भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने भी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक सारी घोषणाएं बजट के माध्यम से की है, तो उससे भी हमें आने वाले समय में लाभ मिलेगा। ये जो ऊर्जा का उत्पादन हमारा होता है उसके क्षेत्र में भी माननीय अध्यक्ष जी, इसमें चाहे बिजली के उत्पादन के संयंत्र हो, इस्पात उद्योग हो, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हो, केमिकल, रसायन और अन्य जो बॉयलर के आधारित उद्योग हैं, उनमें तेजी से विकास होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी और तेजी से मजबूत होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात ठीक है कि जब हम कोई नियम और कानून लागू करती है सरकार, तो चुनौतियां भी कुछ आती हैं, उसके लिए भी लोगों के सुझाव आते हैं और सकारात्मक सुझावों को सरकार हमेशा मानती भी है। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक सुझाव आए और सरकार न माने, उसके लिए माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे, तो निश्चित रूप से इसमें इसके विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता रहेगी कि प्रभावी कार्यान्वयन इसका हो जाए, समय पर हो जाए। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि विधेयक में यह व्यवस्था है कि 3 वर्ष तक केंद्र की सरकार अपने द्वारा इसमें सामंजस्य बिठा के इसको कार्यान्वयन करने की व्यवस्था भी करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सख्त निगरानी प्रणाली की भी आवश्यकता है, यह जीवन से जुड़ा हुआ विषय भी है। यहां पर यह भी नहीं किया जा सकता कि पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि निगरानी बहुत आवश्यक है। सक्षम व्यक्ति मरम्मत कर सके, रेगुलरली उसको चेक किया जाए और इसके लिए प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने निरीक्षक तय कर सकते हैं। उनके जो निरीक्षक होंगे वो उसकी देखरेख करेंगे, समय समय पर बीच में जाएंगे, तो वो भी रिपोर्ट आना जरूरी है। तो निरीक्षण की प्रणाली में बस यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो निरीक्षकों के द्वारा एक करप्शन कई बार देखने को अनेक प्रकार का मिलता है, तो ये मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और वहां के टीम के द्वारा ये होगा कि भाई वो उसको निरीक्षण को प्रभावी रूप से देख सके, केंद्र और राज्य के बीच में इसमें सामंजस्य हो सके। मैं बस अंतिम कुछ बातें कह के आपको अपनी बात को पूरी करूंगा। केंद्र का और राज्यों का सामंजस्य भी महत्वपूर्ण है और साथ में जो केंद्रीय बॉयलर बोर्ड जो बन रहा है वो पूरे अभी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपके समक्ष में रखेगा भी। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में भारत में औद्योगिक सुरक्षा और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल बॉयलरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि नए उद्योगों को, निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। इस विधेयक के माध्यम से बॉयलर निर्माण और संचालन में पारदर्शिता आएगी, औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आएगी, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, भारत के उद्योग जगत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी। अतः मैं एक सुझाव के साथ अपनी बात को पूरी करता हूं कि इसमें फ्लाई एश करके जो एक शब्द आता है अंग्रेजी का,
जो बॉयलर के बाद जो राख जैसे कहते हैं जो निकलता है, तो उसके लिए, उसके डिस्पोजल के लिए कोई व्यापक योजना, व्यापक व्यवस्था जरूर की जाए। अक्सर ये देखने में आता है कि अनेक जगह खेतों में भी इसको डाल दिया जाता है, उसका क्या उपयोग हो सकता है और उसकी स्टडी की जाए कि वो किसके काम आ सकते हैं, तो डिस्पोजल की व्यवस्था भी एक अच्छी की जाए। और मैं ये कहते हुए कि और उससे पर्यावरण के क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। और मैं उन्हें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हुए कि अभी 20 मार्च को कोयले के क्षेत्र में, कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन को क्रॉस करने का काम भारत ने किया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई। और मैं यही कहकर कि इस विधेयक के पक्ष में मैंने बात रखी है, सरकार के पक्ष में मैंने अपने विषय को रखा है। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि देश हित के लिए, व्यापारी हित के लिए, उद्योग हित के लिए, श्रमिक हित के लिए, रोजगार के हित के लिए इसको सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए। यही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बड़े गौर से अपने वरिष्ठ सदस्य माननीय राजकुमार चाहर जी को सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस विधेयक के आने से विदेशी निवेशकों को काफी सहूलियत होगी। शायद सरकार की यही मंशा है कि इस विधेयक को लाने का, कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जो देश के आपके मित्र उद्योगपति हैं, जो विदेशी आपके मित्र निवेशक हैं, ये अमेंडमेंट करके आप छोटे और मझोले उद्योगों का गला घोटना चाहते हैं। सभापति जी, मैं इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से की गई आधी अधूरी तैयारी, जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही, उद्योगों के लिए बढ़ती बाधाओं को उजागर करना चाहता हूं। यह विधेयक 1923 के पुराने कानून को बदलने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में यह ना तो आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है और ना ही भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करता है। सभापति जी, जब पूरी दुनिया में बॉयलर को व्यापक श्रम सुरक्षा कानूनों के तहत शामिल किया जा रहा है, तो आखिर हिंदुस्तान 1923 के पुराने ढांचे पर क्यों भारत सरकार 1923 के पुराने ढांचे को थोपना चाहती है? ब्रिटेन ने 1994 में अपना बॉयलर एक्ट खत्म कर दिया, इसे वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट में शामिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1993 के तहत बॉयलर नियमन शुरू किया। जापान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के तहत बॉयलर सुरक्षा नियम है। जर्मनी में भी इंडस्ट्री कोड के अंतर्गत बॉयलर मानक तय किए गए। इसलिए सभापति जी, क्या कारण है कि अभी भी हिंदुस्तान इसी विधेयक में 1923 के विधेयक में अमेंडमेंट करके इसको लागू रखना चाहती है? विधेयक की धारा 36 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह से इस कानून से छूट दे सकती है। मान्यवर, ये तो सभापति जी, ये तो बहुत ही ऐसा हथियार दे रहे हैं कि जिसको चाहेंगे राज्य सरकारें, और ज्यादातर स्टेट में तो इन्हीं की राज्य सरकारें हैं, तो फिर इनकी राज्य सरकार जैसे चाहेगी वैसे छूट देने का काम करेगी। और उससे क्या होगा कि अगर अंधाधुंध इस तरीके से लाइसेंस बांटे गए अपने चहेते लोगों को मानक के विपरीत, तो फिर दुर्घटनाएं होंगी, बॉयलर विस्फोट होंगे। चाहे छत्तीसगढ़ में भी रासायनिक संयंत्र में 6 लोगों की, मजदूरों की जान चली गई। 1921 की बॉयलर समिति ने स्पष्ट कहा था कि बॉयलर कानून पूरे देश में एक समान लागू होना चाहिए, केवल जो दुर्गम स्थान है उनको अगर छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी छूट दी जा रही है। सभापति जी, इस एक्ट के माध्यम से इंस्पेक्टरों की मनमानी के लिए छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी हुकूमत आने से पहले इंस्पेक्टर राज लागू था। धारा 3/7 के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता था,
लेकिन श्रद्धेय नेता हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो धारा 3/7 समाप्त करके और इस इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का काम किया था। क्या सरकार फिर इंस्पेक्टर राज लागू करना चाहती है इस एक्ट में संशोधन करके? इसलिए सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, कार्य सुरक्षा संहिता 2020 में भी इंस्पेक्टरों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस विधेयक में ऐसा इंस्पेक्टरों के उनके मनमानी पे लगाम कैसे लगेगी? मंत्री जी इसका भी कुछ प्राविधान कर दीजिए। 2022 के आंकड़े महाराष्ट्र में 47% बॉयलर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई। सरकार को इससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। और जो दंड प्राविधान है सभापति जी, वो पुराने जमाने के और प्रभावहीन है। इससे कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग हैं उन पर भी आप वही दंड लगाने का काम करेंगे, और जो बड़े उद्योगपति जो आपके चहेते विदेशी उद्योगपति हैं उन पर भी वही 1 लाख रुपए का। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि छोटे उद्योगपतियों के लिए तो 1 लाख रुपए का आप रखिए, लेकिन जो धारा 32 के तहत बॉयलर में गड़बड़ी करने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना है, तो जो बड़े ये तो छोटे उद्योगपतियों के लिए रखिए तो ठीक है, मझोले कारोबार के लिए, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उन पर कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना रखिए, 5 साल की सजा रखिए, जमानत भी ना उनको मिल पाए। ऐसे कुछ प्राविधान करिए, तभी आम आदमी अगर इसमें दुर्घटना होती है तो उसके लिए तभी वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, अच्छे काबिल इंजीनियर रखेंगे। इसलिए सभापति जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विधेयक ना तो आधुनिक है न जनहितैषी है। हमारी मांग है बॉयलर नियमों को कार्य सुरक्षा संहिता 2020 में शामिल करें, राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति शामिल करें। अकेला वक्ता हूं अपनी पार्टी से, पूरा 15 मिनट है सर, अभी तो समय आज तो दे दीजिए और समाप्त कर रहा हूं जल्दी। इसलिए राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति को सीमित करें, इंस्पेक्टरों की मनमानी रोकने के लिए बीएनएसएस के सुरक्षा उपाय लागू करें, सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को कानूनी मान्यता दें। इसलिए अगर सरकार इन सुधारों को नहीं करती तो ये देश की औद्योगिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए इस विधेयक पर सर्वदलीय सहमति भी ले ली जाए। चर्चा करा रहे हैं, अच्छा होगा जेपीसी का गठन कर लिया जाए जल्दबाजी में, क्योंकि श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ है, छोटे उद्योगपतियों के हितों से जुड़ा हुआ है। एक आखिरी बात कह करके सभापति जी मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कल हम सांसदों की सैलरी कुछ बढ़ाई गई, उसको लेकर के मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, मैं समाप्त कर रहा हूं एक बात आकर के, सभापति जी आप बैठे हैं चेयर पे इसलिए अपनी बात कह दे रहे हैं, इसलिए लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सांसद निधि का बढ़ाया जाना। कम से कम 25 करोड़ रुपए सांसद निधि करिए, और जब तक नहीं बढ़ा रहे सांसद निधि तब तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कम से कम 50 किलोमीटर सड़कें सांसदों को बनाने का प्रस्ताव दें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। Sir, I rise to speak on the Boilers Act 2024, which has been moved by Sri Piyush Goyal, who is the Minister for Commerce and Industry. Sir, this bill is not a significant bill in the sense that it's a sort of repetition of the Boilers Act, which was enacted in 1923. Like many other British era acts, somehow or other we did not give attention to overhauling the whole act, which is why we are bringing a bill after 100 years for these boilers. Sir, what are these boilers? Boilers are vessels where water is boiled with the help of external agencies that builds up steam
and the steam is passed through pipes. Now, what work does it do? It gives, we know, that when the gas will expand, it will do work. So a boiler is used to do work, like in a jute mill. For a jute press, you need steam from a boiler. This is the boiler act. But what is the danger? The danger is, as you know, Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume, which means if the pressure is too much, then it will tend to expand, and that will give rise to accidents. The Boilers Act is to prevent such accidents. And a whole structure is built up as to how boilers can be inspected properly. The structure is at a central level. There is a boilers board which is controlled by the government of India. A secretary of the government of India is the chairman. And then it has a technical advisor who acts as the secretary. But the work is not done by the central government. The work is done at the state level, where boiler inspectors are there, and they do the work of day-to-day inspection. So there is a chief inspector, there is a deputy chief inspector, and there is inspector. These people inspect and validate all works connected with boilers. Now there are two types of work. One is manufacture of boilers, where a sufficiently strong metal vessel has to be built, where steam will be produced. Two is erection of boilers. Now for both these, for manufacture of a boiler and for erection of a boiler, the clearance from these inspectors is needed. One has to be very careful, because if we give a boiler clearance without properly inspecting it, it may lead to accident. The main problem is with regard to the valves. When the steam is generated, steam can be further heated by flue gas. And then, that is, the steam can be heated. And then it passes through a valve into a tube where the machine is being operated. These are steam operated machines. Now one has to be very careful. The chief inspector gives clearance, but at every stage, the boiler inspector has to certify. And if that certification is not there, the person whose factory has a boiler, which either makes a boiler or acts with the help of the boiler, they will be put under inspection. And in some cases, there is a huge fine that they can impose. And also, there is this provision of appeal. If anybody has complained about an inspector, he may complain to the chief inspector and ultimately to the central government. These different levels are provided. So I do not want to speak much on this bill because it has already been passed by the Rajya Sabha. They have studied, and they have given a final report. All I want is that if you go to some factory, which my area
lot of factories are there, you find that the factories which use boilers are in a dilapidated condition, ancient condition. We must see that our factories are modernized, because not being modernized, they can lead to accidents, causing the life of poor workers. So with that, I'll Thank you. support this bill Thank you, Professor. and recommend it for acceptance. Through DM Kadir Vanakkam, Chairperson Avargale. Sir, I rise today to address the Boilers Bill 2024. This is a legislation that promises reform but delivers disappointment. While the intent to modernize the Boilers Act of 1923 is welcome, this bill is riddled with flaws and demerits that undermine its objectives. Allow me to outline the shortcomings point by point, urging the House to consider and refine it. Sir, there's a weak safety measures, which is a flaw that I have found out. This bill claims to prioritize safety by requiring competent persons for repairs and protecting workers inside the boilers. But where is the substance? It fails to define clear standards for competence. No mandatory training, no certification framework, no periodic checks. Without this, enforcement remains a hollow promise, leaving workers exposed to the same risk of explosions and accidents that plagued the 1923 Act. Why no mandate for modern safety tools like real-time monitoring? This is a superficial fix, not a safeguard, sir. Sir, a blast and a fire at an Indian Oil Corporation plant in Chennai resulted in fatalities. I want to remind this House. Indian Oil Corporation is a Maharatna company making profits year by year. The amount of income generated by IOCL, it can definitely focus more on safety and security of the boilers used in the companies. I think the petroleum and the natural gas ministry has to focus on this. Sir, I should remind the House of the Bhopal gas leak incident, which is also a big incident that took many of the lives because of these boilers. Another boiler explosion at the NLC, India's thermal power plant in Tamil Nadu, resulted in multiple fatalities and injuries, sir. The NLCL is also a Maharatna company having huge income generation, and therefore, I urge the union government to be more focused on the safety and security of the boilers used in the companies. And there's an environmental neglect in this bill, sir. Boilers are major polluters. Yet this bill is silent on the environmental responsibility, which is the talk of the town. There is no push to phase out high emission boilers, no incentives for cleaner fuels, and no integration of renewable energy options. As India chases the climate goal, the omission is indefensible. Are we to let air pollution worsen and our net zero commitments falter because of legislative inertia? The bill must address the ecological cost of the industrial progress, sir. The flawed decriminalization, very important point. The shift from the fines to penalties for 4 of 7 offences aims to erase business burdens, particularly for the MSME. Yes, it weakens accountability. The line between the minor and major violations is a blurry, inviting subjective enforcement by inspectors. Worse, more penalty powers to executive hands, sidelining courts, risk bureaucratic overreach and corruption. Far from the ending the inspector Raj, this could enrich it. Clarity and judicial oversight are not negotiable. The centralized overreach. India's industrial landscape is diverse. States thrive on manufacturing while others lag. Yet this bill imposes uniform legislation and inspection norms via the Central Boilers Board with a little room for state-level flexibility, sir. This centralization strives local innovation and ignores regional needs. Why not empower states to adopt standards for honoring our federal structure? One size fits all is a colonial relic we must discard. As per the bill, the union government will constitute a central boilers board to frame regulations. The bill provides that regulations made by the central boilers board and rules made by the state government will be finalized after publication for public consultation. However, the bill does not require public consultation for rules framed by the union government. This is a major flaw.
This will only add fuel to big brother attitude of union government and its unnecessary dominance over the state governments. There is a need for public consultation of the rules framed by the union government also, sir. Sir, I'm concluding, sir. Lack of stakeholders' input. Who shaped this bill? Not workers, not trade unions, not environmentalists, not small industrialists. Their exclusion is a glaring flaw, where the provisions for the workers' voices in safety audits. Where is the support for MSME facing compliance costs? A top-down approach alienates those it affects most, risking a law detachable from reality. Consultation is not a luxury, it is a necessity, sir. Sir, I'm just going to conclude, sir. Give me a few minutes more, sir. Missed technological leap. The world has moved to smart boilers, IoT-enabled and energy-efficient predictive. Yet this bill clings to the 1923 shadow, tweaking outdated rules instead of embracing Industry 4 standards. No incentives for innovation, no push for efficiency, just status quo in a new wrapping, sir. How will our industries compete globally with such timid vision? We need a future-ready law, not a rehash of the past. Another important aspect needs security is that, for example, sir, BHEL, which is a major industrial boiler manufacturing facility, particularly for high-pressure boilers and power plants with other notable companies in the Indian boiler market, including Thermax, L&T, Siemens, and Dushan Power Systems. But in the last 10 years, during this BJP government, the business potential of BHEL has systematically destroyed, and a large chunk of the business went to private companies. This is absolutely an unpardonable mistake by the union government and its major PSU companies. Honorable Speaker, sir, I'm concluding. Honorable Speaker, sir, Chairman. These 6 points: weak safety measures, environmental neglect, flawed decriminalization, centralized overreach, lack of stakeholders' input, missed technology leap. The minister will definitely have to answer all these points, sir. The Boilers Bill 2024 as a flawed endeavor, lacking in safety regard, environmental foresight, fairness, federal system inclusion and ambition. Sir, I urge this House to amend it, bolster safety with the clear standards, add green mandates, refine decriminalization, decentralize authority, involve stakeholders, and champion technology. Only then we will have a law worthy of India's potential. Thank you, sir. Thank you. Sri Nagaraju. గౌరవనీయుల స్పీకర్ సార్, ఈరోజు 2024 సంవత్సరము బాయిలర్ బిల్లు మీద మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రధానమంత్రి వర్యులైనటువంటి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి మరియు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులైనటువంటి గౌరవనీయులైన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు 2024కు సంబంధించి ఈ బాయిలర్ బిల్లులో ముఖ్యంగా ఈ బిల్లు యొక్క లక్ష్యం ఏమంటే మా ప్రజల యొక్క భద్రతను మరియు విలువైన వనరులను బాయిలర్ స్పెల్ల కారణంగా సంభవించే విపత్తుల నుంచి రక్షించడం కోసం నిర్దేశించడమైనది. ఈ బిల్లులో ప్రధాన అంశాల్లో మొదటిగా వ్యాపారం యొక్క నిర్వహణ సౌలభ్యం కోసం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ను పెంచే అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. చట్టపరమైన వ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థీకరించడం ద్వారా 7 నేరాలలో 3 నేరాలను డీక్రిమినలైజ్ చేయడం వల్ల ముఖ్యంగా సూక్ష్మ మరియు చిన్న మధ్య తరహా సంస్థలకు ఎంఎస్ఎంఈలకు నిర్వహణ భారాన్ని తగ్గిస్తుంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే రెండో అంశం అధ్యక్ష, కోర్టు విధించేటువంటి జరిమానాల స్థానంలో కార్యనిర్వహణ జరిమానాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నియంత్రణ ప్రక్రియ వేగంగా జరిగి సమర్థవంతంగా ముందుకు సాగుతుంది అధ్యక్ష. ఈ బిల్లులో ఈ సంస్కరణల ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం వ్యాపార నిర్వహణ భారాన్ని సౌలభ్యతాన్ని మరింత పెంచుతుందని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష, మా గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వారి యొక్క నాయకత్వంలో వ్యాపార నిర్వహణ వేగం పెంచి గత 3 నెలల్లో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మరియు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బట్టి 9,700 కోట్ల తయారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి రాష్ట్రంలోనే పురోగతిని సాధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సంపదను సృష్టించడంలో మరియు సమాజ హితాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో తన సామర్థ్యానికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ బిల్లులో ముఖ్యంగా అధ్యక్ష అనువైన సమయంలో తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. ఇది ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న బాయిలర్ ప్రమాదాల దృష్ట్యా గత దశాబ్దంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా
23,000 బాయిలర్ ప్రమాదాలు సంభవించగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణించిన వారిలో 34% మన భారతీయులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు అన్ని స్టేక్ హోల్డర్ల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంపొందించి బాయిలర్ ప్రమాదాలను తగ్గించి సురక్షిత పారిశ్రామిక వాతావరణాన్ని అందిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే ముఖ్యమైన అంశం అధ్యక్ష, ఈ బిల్లులో ఈ బాయిలర్ బిల్లు నియంత్రణ వ్యవస్థను చాలా సరళీకృతం చేస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. కేంద్ర బాయిలర్ బోర్డు వచ్చేసి ముఖ్యంగా అధికారం మరియు బాధ్యతలను స్పష్టంగా పేర్కొంటుంది అధ్యక్ష. ఈ బాయిలర్ బోర్డు అనేది బాయిలర్ యొక్క రూపకల్పన, తయారీ మరియు నియంత్రణ వ్యవస్థల కోసం ఈ బోర్డుకు అధికారం ఇవ్వడం ద్వారా సమర్థవంతమైన నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది అధ్యక్ష. ఈ బోర్డు వచ్చేసి IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతను అనుసరించి బాయిలర్ యొక్క పరిస్థితులను రియల్ టైం మానిటరింగ్ చేస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇక చివరిగా అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా పరిపాలనలో సాంకేతికతను సమగ్రంగా అనుసంధానించడంలో ముందంజలో ఉంది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు గేట్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ మధ్య తాజా భాగస్వామ్యం ద్వారా ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం మరియు మెడ్టెక్ వంటి రంగాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించారు అధ్యక్ష. ఇక అమరావతిలో మా దూరదృష్టి గల ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డీప్ టెక్ భవనాన్ని స్థాపించి సాంకేతిక సామర్థ్యాలను పెంపొందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అయితే ఈ మహత్తరమైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి స్వర్ణాంధ్ర 2047 దిశగా రాష్ట్ర భవిష్యత్తును అభివృద్ధి చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మద్దతును కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. ఇక ఫైనల్ గా అధ్యక్ష, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కౌలిని యుగం అనే బాయిలర్ చట్టం ద్వారా 1924 పునఃసమీక్షించేందుకు తీసుకున్న అవసరమైన చర్యలను ప్రశంసిస్తున్నాను అధ్యక్ష. భారతదేశం యొక్క పారిశ్రామిక రంగ భద్రత మరియు పెరుగుదల కోసం ఈ చట్టానికి మేమంతా మద్దతు ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. श्री कुमार, कौशलेंद्र कुमार। सभापति महोदय, आपने मुझे बायलर विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक बायलर अधिनियम 1923 को बरकरार रखते हुए कुछ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखती है और यह मुख्य रूप से बायलर के डिजाइन को प्रमाणित करने के लिए बाध्यता सुनिश्चित करता है। किसी भी प्रकार के बायलरों को निर्माता को डिजाइन प्रमाणित करने और निरीक्षण करने के लिए जरूरी कदम उठाना होगा, क्योंकि बायलर विस्फोट की जितनी भी घटनाएं होती है और जान माल की क्षति होती है, उस सब के पीछे मुख्य रूप से बायलर डिजाइन की कमी के चलते ही है। इस बिल का मुख्य विशेषता यह है कि राज्य सरकार के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। प्रमाण पत्र और निरीक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी। निरीक्षण के लिए तीसरे पक्ष की भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय बायलर बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव रखती है। सभापति महोदय, पूरे देश में अभी करीब 40 लाख बायलर लगे हुए हैं, जो प्रायः स्टीम बायलर है और इसे नियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बायलर फटने की अधिक घटनाओं के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि नए अधिनियम में सुरक्षित संचालन करने के लिए बायलर घटनाओं को निर्माण, स्थापना और संचालन, परिवर्तन और मरम्मत के लिए कानून काफी पारदर्शी एवं स्पष्ट और सरल होगा। सभी घटनाओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। स्पष्ट है कि देश में बायलर फटने की घटनाओं पर विराम लगेगा और जान माल की क्षति का से भी बचाव होगा। महोदय, अभी एक सप्ताह पहले भिवाड़ी अलवर में बायलर फटने की घटना हुई, काफी जान माल की क्षति हुई है। पंजाब के लुधियाना में भीषण बायलर फटने की घटना अभी 8 मार्च 2025 को हुई है। झारखंड के सरायकेला की घटना भी काफी दुखद है। अभी जनवरी 2025 में बिहार के समस्तीपुर के बैनी में बायलर फटने की भीषण दुर्घटना हुई है। कई मजदूरों की जान भी गई है। बायलर फटने के कारण ही होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में राइस मिल और अन्य छोटी छोटी फैक्ट्रियां में काफी बायलर लगा है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। जांच प्रक्रिया में अभी घटनाओं में वायरल में कमी होने की बात आती है।
आप नियंत्रित होने के मुख्य कारण बताए जाते हैं। डिजाइन और किसी भी फैब्रिकेटेड से वायरल बनाकर लगा दिया जाता है। फैक्ट्री मालिक को सस्ता वायरल चाहिए और उन्हें सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं रहता है। आशा है इस बिल से वायरल अधिनियम काफी सशक्त और पारदर्शी होगा। देश में वायरल फटने की घटनाएं पर विराम लगेगा। जान माल की जो क्षति हो रही है उसका बचाव होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बजरंग सोनवाने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूं। अपने इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में बॉयलर जैसा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आज है। बॉयलर विधेयक 2024 के विरोध में मैं अपना मत प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विधेयक जो लगभग एक सदनी पुराने बॉयलर अधिनियम 1923 का स्थान लेने का प्रस्ताव करता है, कई गंभीर चिंताएं इसमें जन्म लेती है। माननीय महोदय, ये जो विधेयक लाया है, ये विधेयक में जो कोई सुझाव दिए हैं, ये सुझाव के बारे में मैं कुछ बात कहूंगा। न्याय प्रणाली का अभाव विधेयक के प्रस्तावों में अनुसार के केंद्र सरकार ने कुछ मुख्य निरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक के आदेश अंतिम माना जाएंगे। ये उन्हें किसी भी अदालत में चुनाव दे नहीं सकेंगे। यह प्रावधान नागरिकों के न्याय अधिकारों का हनन करता है और प्रशासकीय निर्णय को पारदर्शिता पर सवाल उठता है। और दूसरा पॉइंट, अपील व्यवस्था की कमी है। विधेयक में निरीक्षण के निर्णय के खिलाफ अपील की एक समिति व्यवस्था है, जिसमें मुख्य निरीक्षक के सक्षम अपील की जा सकती है। और हालांकि मुख्य निरीक्षक द्वारा पंजीकृत और उसके नवनिरीक्षक के संबंधी आदेशों के खिलाफ अपील की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। यह प्रभावी पक्षों के लिए न्याय प्राप्ति के मार्ग को सूचित करता है। गैर अपराधी और सुरक्षा मानने के प्रभाव, विधेयक में कुछ अपराधियों के गैर अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है, जिसमें बॉयलर उपयुक्त कार्यकर्ता जिसको एमएसएमई क्षेत्र को लाभ मिलने की बात कही नहीं कही गई। हालांकि ये सुनिश्चित करता आवश्यक है कि गैर अपराधीकरण से सुरक्षा मानने के में कोई कमी नहीं आ रही है। श्रमिकी या सुरक्षा समझौतों का नहीं है। प्रशासकीय शक्तियों का केंद्रीकरण, विधेयक केंद्र सरकार को केंद्रीय बॉयलर बोर्ड की स्थापना और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि राज्य सरकारों को निरीक्षकों को नियुक्ति कर अधिकार देता है। यह शक्तियों के केंद्रीय प्रशासन जटिल में कोई बढ़ा सकती है और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। अगस्त प्रदान करने में कोई जो गलतियां इसमें है सर, बॉयलर जब अपने को कोई बनाना है या उसका दुरुस्ती करना है, उसी में कुछ ऐड करने के लिए है तो पूर्व परवानगी लेना आवश्यक है। बॉयलर को ही दुरुस्त करना है तो उसको कॉम्पोनेंट अथॉरिटी से पहले मंजूरी लेना जरूरी है। और उसके बाद जो है तो कोई वो बॉयलर जो बनाना है तो उसके लिए क्वालिफाइड कॉम्पोनेंट पर्सन होना जरूरी है। यही बात इसमें कही है। कोई रूरल एरिया में बॉयलर जब बनाते हैं तो कोई दिक्कत आती है। और बहुत सारी इंडस्ट्री अपने मैं जय क्षेत्र से चुन के आता हूँ और जो महाराष्ट्र से मैं चुन के आता हूँ, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में देश के अंदर है। ये महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे बॉयलर्स है, ये बॉयलर के सब हर चीज को पार्ट में जो प्रेशर पार्ट है उसमें कोई इकोनॉमिजर है, कोई जो भी कोई चीज है वो इसमें जो स्टाफ है वो स्टाफ भी स्किल्ड होना जरूरी है। जी को वाटरमैन रहेगा, बॉयलर अटेंडेंट रहेगा या इंजीनियर्स रहेगा, वो सब क्वालिफाइड होने की जरूरत इसमें इन्वॉल्व की है और ये भी जरूरी भी है। और ये चीज कोई है जो है तो जो गवर्नमेंट ने जो बिल लाया उसमें अंदर कोई नहीं लिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बॉयलर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, बॉयलर में जो है तो क्वालिफाइड इंजीनियर्स होना जरूरी है और क्वालिफाइड स्टाफ होना जरूरी है। वाटरमैन या पंपमैन या अटेंडेंट सब ऑल जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। उसके बाद जो है अभी जो ये गुनेगारी जिसमें जो